चिल्ला चिल्ला के सबको मैं ग्रीन मूंग चिल्ला की रेसिपी बताने वाली हूँ कुछ ही सेकंड्स में। Hello and welcome to the Shilpa Shetty channel, and this is the art of loving food. तो आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन मूंग चिल्ला। ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ग्रीन मूंग इज हाई इन प्लांट प्रोटीन and it also contains essential vitamin folate. आज हम चिल्ला बनाएंगे using the Nutralite DoodhShakti Probiotic Butter Spread. The creamy milk in it will make it yummy and tasty, and the probiotics will also support immunity. तो शुरू करें? So this is our soaked sprouted moong. ठीक है? 1.5 cups. इसमें 2 कप है, हम लोग सिर्फ 1.5 का इस्तेमाल करेंगे आज. Good. Cauliflower, पालक, धनिया. ये ज़्यादा कौड़ी मिर्ची नहीं है, so this is easy to eat and digest. स्टू लेकिन आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, मैं 1.5 डाल रही हूँ. अब डालिए इसमें थोड़ा सा पानी, around half a cup. ग्राइंड करके देखेंगे और पानी की ज़रूरत है कि नहीं. कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इट्स नॉट टू रनी. Now we add in our masalas. Half a spoon of jeera powder, chili powder, coriander powder, half a spoon, and salt. Give it all a mix. Gas on कर दीजिए. We add our Nutralite DoodhShakti Probiotic Butter Spread. So you have to cook the chilla for at least 2 to 3 minutes on each side. आहा, ठंडी ठंडी दही और टमाटर की चटनी के साथ अपने ग्रीन मूंग चिल्ला को सर्व करके खाओ. It tastes just fab. This is also a great way to sneak in veggies in your kids' meals, and it's going to be loved by adults too. Adding the Nutralite DoodhShakti Probiotic Butter Spread is truly the butter way to do it. Try ज़रूर कीजिएगा ये recipe. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Do press the bell icon to make sure you get all the latest updates. And do download the simple soulful app now. तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मज़े करो.